The Airports Authority of India, AAI, has added 2 new Beechcraft 360 type of aircrafts equipped with advanced state-of-flight inspection system into its flight inspection fleet. The induction ceremony took place in the presence of Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel, and General Dr. Vijay Kumar Singh, Honorable Union Minister of State for Road Transport and Highways and Civil Aviation. A pujan ceremony was also held at Safdarjung Airport in New Delhi in the august presence of Shri V. Vualnam, Secretary Civil Aviation, Shri Sanjeev Kumar, Chairman of Airports Authority of India, and other senior officials. With the induction of these new aircrafts into its fleet, AAI will be able to accomplish the timely flight calibration of the Ground Radio Navigational visual aids at all airports in the country. We're also unveiling the 2 new aircrafts that have been bought by the Airports Authority of India to be able to charter the ground navigation aid systems across multiple airports, the calibration of those, and for those who are untraversed in the civil aviation lexicon, that truly means ensuring that our ILS systems at every single airport are operating in the manner that they should. The Flight Inspection Unit is a very critical component in the safety chain of air navigation service provided by Airports Authority of India throughout the Indian airports. B-360 जो हमने 2 विमान अभी इंडक्ट किए हैं, इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन लगी हुई हैं जो हमारे इंजीनियर्स जो हैं जितने भी एयरपोर्ट हैं और एयरपोर्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमारे नेविगेशन के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे रडार हो गया और बहुत सारे तरीके के इक्विपमेंट हैं, DVOR है, DME है, उनका कैलिब्रेशन करना होता है, उनकी सत्यता चेक करनी होती है जो आईकाओ के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। इनकी जब सत्यता सत्यापित कर देते हैं उसके बाद में जितने भी कॉमर्शियल प्लेन हैं उस सत्यता पर आधारित फिर अपनी फ़्लाइट करते हैं। ऐसे ही हम हर एयरपोर्ट पे प्रोसीजर्स बनाते हैं, उस प्रोसीजर की भी सत्यता ये चेक करेंगे और चेक करने के बाद में इसमें गति मिलेगी हमें। ये 2 नए एयरक्राफ्ट आने के कारण हर एयरपोर्ट की हम सत्यता जल्दी से जल्दी चेक कर पाएंगे। Flight inspection being critical in ensuring the best international standards as set by the International Civil Aviation Organization ICAO needs to keep pace to ensure Indian aviation gets this equipment to function to the strictest parameters.